Attention, students of ICSE Class 9 and 10 and Intermediate First Year. Do subscribe to Study with Sudhir YouTube channel where we cover English literature, history, civics, geography, biology and English grammar and many important motivational videos too. Don't forget to click on the bell icon so that you can get regular updates. Hello and welcome to your digital classroom Study with Sudhir. I hope you have been looking at all the videos that are published here. It's the month of December, not much time before the board exams start for the ICSE Class 10, and today we are looking at the chapter Muslim League from History. I hope you have already seen part 1 of the chapter where we discussed the reasons, the causes for the formation of the Muslim League in 1906 and also the specific events jiski wajah se Muslim League was formed in 1906. That's a very important chapter, so I would advise you first you look at part 1 before you come to part 2, where we are going to discuss the specific formation of the Muslim League and its impact on the Indian national movement. But before we start, the statutory request, do subscribe to the channel, press on the bell icon so that you can get all the regular updates of whatever we are posting and publishing here on Study with Sudhir. So let's get started on the digital classroom about the formation of the Muslim League. Muslim League की स्थापना के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिस तरह की जो घटनाएं हुई 1-2 साल या 6 साल मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से पहले, उसकी वजह से और ख़ास तौर से 1906 के अक्टूबर में जो 35 मुसलमान प्रमुख मुसलमान लेड बाय आगा खान वेंट एंड मेट लॉर्ड मिंटो इन शिमला, उसकी वजह से the process of the formation of the Muslim League started. And Nawab Salimullah, जिनका की जिक्र मैंने पहले भाग में किया था कि please make a note of it because he is going to be an important figure in the Muslim League. Now Nawab Salimullah of Dhaka in East Bengal took the initiative to form this separate organization, political organization for the Muslim community. And in December 1906, 2 months after the 35 Muslim personalities met Lord Minto, in December 1906, they assembled in Dhaka and Nawab Salimullah arranged a meeting to consider this proposal to form the Muslim League. So, on December 13, 1906, December 30, 1906 ko All India Muslim League was set up and the first president was Nawab Salimullah of Dhaka, who I mentioned. He was one of the main proponents of the formation of the All India Muslim League. Aga Khan, who had led the delegation to Lord Minto, he was elected as the permanent president of the Muslim League. So Aga Khan was the permanent president, and on December 30, 1906, under the presidentship of Nawab Salimullah, the All India Muslim League was set up. Its headquarters were meant to be in Aligarh, about who I said कि अलीगढ़ उस समय पर एक प्रमुख मुस्लिम शहर हुआ करता था जिसका की एक अपना एक अलग stature था. So its headquarters of the Muslim League was supposed to be in Aligarh, but in 1910, that is 4 साल बाद, it was shifted to Lucknow. So Lucknow became the headquarters of the All India Muslim League from the year 1910. पहले 3-4 साल के लिए it was in अलीगढ़, which is also in the United Provinces, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है. अब हम नजर डालते हैं कि what were the objectives and aims of the Muslim League. पहला एम था to promote among the Muslims of India support for the British government, कि मुसलमानों के बीच में अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरह से समर्थन की भावना पैदा करना और उसको प्रमोट करना, और अंग्रेजों के बारे में जिस तरह की जो भावनाएं थी उसको ठीक करने का भी काम और बेड़ा ये मुस्लिम लीग ही उठाएगी. दूसरा, to protect and advance the political rights and interests of the Muslims and to represent their needs and aspirations to the government in mild and moderate language. ये बहुत important बात है कि mild और moderate भाषा में ही अंग्रेजों को बताया जाए. तो मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि वे किसी तरह का एक confrontationist attitude, they did not want to adopt a confrontationist attitude vis-a-vis the British Empire, but wanted to communicate to the British rulers in mild and moderate language the needs and aspirations of the Muslim community in India, and also to promote and protect their political rights of the Muslims, their political interests of the Muslims as well. And
they also wanted to prevent the rise of feelings of hostility कि मुसलमानों और बाकी समुदाय हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, उनके बीच में किसी तरह का हॉस्टाइल रिलेशंस ना रहे, उसकी भी कोशिश ये मुस्लिम लीग ही करने वाली थी। अब हम नजर डालते हैं कि इंपैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था, और इसमें बेसिकली 4 पॉइंट है। पहला तो ये कि in the beginning, the Muslim League stood apart from the national movement, opposed the anti-partition movement of Bengal and the Swadeshi and boycott movements. पहले तो Muslim League were not really a part of the Indian national movement. और दूसरा बात, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत एक अलग जो इलेक्टोरेट था मुसलमानों के लिए, उसका भी प्रावधान किया गया। तीसरा, मुस्लिम लीग ने सब्सिक्वेंटली रेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान एट द लाहौर कांग्रेस इन 1940, और मोहम्मद अली जिन्ना वाज द वन हु पुट फॉरवर्ड हिज टू नेशन थ्योरी व्हिच अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। और एक तरह से देयर वाज अ डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीग टुवर्ड्स द कांग्रेस व्हिच कल्मिनेटेड इन द लखनऊ पैक्ट इन द ईयर 1916। सो दिस वर द 4 मेन impact reasons of the impact of the Muslim League on the Indian national movement. One vis-a-vis the Congress, one vis-a-vis the separate electorates for the Muslims, one the leading to the partition of India, the raising of the two-nation theory by Muhammad Ali Jinnah, and of course the first and important reason that they were not really a part of various movements which were launched by the Indian National Congress. They kind of kept away from it, starting from the anti-partition of Bengal movement itself. Now we come to the Lucknow Pact, which is an important event which took place at around this point in time in 1916. Now the joint scheme, what is the Lucknow Pact? The joint scheme of political reforms agreed to by both the Congress and the Muslim League in 1916 was known as the Lucknow Pact. Lucknow Pact, one reason was because the headquarters of the All India Muslim League was in Lucknow at that point in time, starting from 1910. So the joint scheme of political reforms which was agreed to between the Congress and the Muslim League leadership was known as the Lucknow Pact. Now Lucknow Pact के तहत what were really the circumstances that led to the Lucknow Pact, that also you need to know. Now because of the pro-Turkey and the pro-Caliph sentiments of the Congress, so ravaiya of the Muslim League towards the Congress also started changing. Then partition of Bengal का जो annulment हो गया, खारिज हो गया 1911 में, that also changed the attitude of the Muslim League towards the Congress. Then Muslim League also realized that they need to work together with the Congress in order to ensure that there is going to be freedom from the British rule in India also. So they realized that they cannot really work in isolation. And also the assertive nationalists or early nationalists, जिसके बारे में दूसरे चैप्टर में पहले के चैप्टर्स में पढ़े हैं, उसकी वजह से भी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया, जिसकी वजह से भी एक लखनऊ पैक्ट होना बहुत जरूरी हो गया. Now what really was the Lucknow Pact all about? And this is an important thing about the terms and the clauses of the Lucknow Pact. पहला क्लॉज ये था, the abolition of the India Council. Lucknow Pact, which was signed between the Congress and the Muslim League. The India Council of the Secretary of State operating from England should be abolished. So जो Secretary of State जो लंदन में बैठ के भारत के ऊपर, भारत में जो भी होता था उसका निर्णय करते थे, उसका जो India Council of the Secretary of State है, उसको खारिज करना चाहिए. This was one of the first clauses of the Lucknow Pact. दूसरा, the minorities should have adequate separate representation in elected bodies. Minorities यानी कि Muslims, Sikh हो या ईसाई हो, they should have adequate separate representation in elected bodies, खास तौर पे मुसलमान. Then the limitation of the imperial legislature. Imperial legislature यानी कि आज की पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में थी. So defense, foreign affairs and political relations of India, that is the declaration of war, signing of peace treaties, were excluded from the control of the imperial legislature. तो उसको कहा गया कि आप इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप एक्सक्लूसिव निर्णय नहीं ले सकते. So they try to limit the powers of the imperial legislature. Okay. Then the provinces were to be autonomous in their specific spheres. So provinces जैसे मद्रास स्टेट था, मुंबई बॉम्बे स्टेट था, मैसूर था जो कि आज का कर्नाटका है, ट्रावनकोर, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल. सो द आइडिया वाज दैट ईच ऑफ दिस प्रोविंसेस हैड टू हैव एडिक्वेट पावर्स इन देयर ओन रीजन्स, कि अपने प्रदेशों पर उनको पूरा अधिकार होना चाहिए, किस तरह के कानून बनाए और किस तरह का राज्य वे करें. हाफ द मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयस
एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस, कि उनकी जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होनी थी उसमें से एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स, आधे सदस्य दे नीड भारतीय होने चाहिए। और इसके साथ साथ उनको लखनऊ पैक्ट में यह भी कहा गया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स शुड नॉट हैव जुडिशियल पावर्स, कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके ऊपर उनके साथ साथ उनको न्यायिक powers अधिकार नहीं होने चाहिए, they should not be having judicial power. So these were some of the clauses of the Lucknow Pact which you should know, which kind of was a compromise between the Congress and the Muslim League with specific reference to political reforms which they sought from the British. Now, what was really the significance of this Lucknow Pact which was signed in 1916, 10 years after the Muslim League came into existence? Pehla and the most important reason is that it kind of symbolized Hindu Muslim unity. हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता का ये प्रतीक था लखनऊ पैक्ट। और कांग्रेस ने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया अपने सेक्युलर कैरेक्टर पर। कैसे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज इस तरह से किया, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को माना। तो एक तरह से जो सेक्युलरिज्म मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल, एवरी समुदाय इज इक्वल, एवरी कम्युनिटी इज इक्वल, उसको परे रखते हुए मुसलमानों के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग का समर्थन किया। The Muslim League also compromised a bit because they accepted the principles of election and majority rule, कि जो majority होगी किसी भी समुदाय की हो, that will have the final say. So उसकी बात उन्होंने मुसलमानों के मानी। So there was a spirit of compromise in the Lucknow Pact. और इसकी वजह से 1916 से लेकर 1922 तक उसके बाद थोड़े से डिफरेंसेस पैदा हुए, लेकिन एटलीस्ट 6-7 साल के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने, खासतौर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर काम किया। The Lucknow session, the second point, unity within the Congress. How did it help the unity within the Congress? The Lucknow session and the signing of the Lucknow Pact brought about a sense of unity between the assertive nationalists and the early nationalists, जिसके बारे में हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। और अंबिका चरण मजुमदार, उन्होंने लखनऊ सेशन के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे 1916 में, अंबिका चरण मजुमदार ने कहा कि अगर यूनाइटेड कांग्रेस वाज बरीड इन सूरत इन 1907, जब सूरत स्प्लिट हुआ, लखनऊ में उसका पुनर्जन्म हुआ है। तो एक तरह से देयर वाज अ फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी आफ्टर द लखनऊ पैक्ट बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। इसके साथ साथ तीसरा, सरकार के ऊपर दबाव भी पड़ने लगा और ब्रिटिश सरकार ने यह रियलाइज किया कि अगर ये हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काफी खतरा बन सकता है अंग्रेजों के लिए अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। कई और सालों के लिए वे अंग्रेज भारत के ऊपर अपना that they can continue to rule. So it started building up pressure on the government. The fourth point is the necessity to pacify Indians. As the First World War continued, because it was the same time, 1916 was the Lucknow Pact which was signed. 1914 to 1919 is when the World War I was being fought, especially in Europe. So as the First World War continued, the leaders of the Congress and the Muslim League, they tried to tell the British government that their demands for constitutional reform should not be rejected if they wished that Indians should be loyal to the British. अगर वे चाहते हैं कि भारतीय हिंदू हो या मुसलमान ब्रिटिश सरकार के साथ एक तरह से लॉयल्टी के साथ पेश आए, तो उनको यह मानना पड़ेगा कि किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसकी वजह से द ब्रिटिश गवर्नमेंट देयरफॉर फेल्ट इट नेसेसरी दैट दे शुड हैव ए डिक्लेरेशन by August 20, 1917, which promised a policy of gradual development of self-government institutions in India, कि कई सारे self-government institutions in India को develop किया जाए 1917 तक, ताकि भारतीय खुश रहें। एक तरह से they continue to have a policy, a spirit of agreement with the British government. लेकिन लखनऊ पैक्ट ऐसा नहीं था कि everything was hunky dory, ऐसा नहीं था कि everything was ठीक ठाक as far as the Lucknow Pact was concerned, because Lucknow Pact essentially was between the Congress leadership and the Muslim League leadership, और इसमें लोगों को involve नहीं किया गया था। तो it was not a very mass based kind of an agreement which was reached, और सिर्फ नेता ही आपस में बैठकर उन्होंने इस लखनऊ पैक्ट को फ्रेम किया था। The Lucknow Pact, point number 2, और इसमें भी it was confined only to the educated and rich Hindus and Muslims. That was also the feeling, उस तरह की भावना भी काफी spread हुई। Lucknow Pact, point number 2, seemed to have laid stress on the separate interests of Hindus and Muslims and their separate political existence, because Congress की demands थी and Muslim League की demands थी, so it really kind of underlined कि इन दोनों के political interests भी एक दूसरे से विभिन्न हैं। और
द पैक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए कम्युनल वीटो, और ये प्रमुख पॉइंट है। कम्युनल वीटो क्या होता है? बिकॉज नो लेजिस्लेचर कुड प्रोसीड विद एनी बिल इफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी स्पेशली द मुस्लिम्स अपोज्ड इट। हिंदूज भी हो सकते हैं। सो कम्युनल वीटो के तहत अगर एक समुदाय के 3/4 सदस्य उसका विरोध करते हैं तो वो बिल, वो लेजिस्लेटिव पीस कैनॉट बी पास्ड। दैट वाज नोन एज द कम्युनल वीटो, और ये लखनऊ पैक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच कैन कम एज अ 2 मार्क क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द कम्युनल वीटो एंड व्हिच it could come as which pact did it belong to. So you need to say the Lucknow Pact of 1916, and what was the communal veto that it provided for, that no legislature could proceed with any bill if 3/4 members of a particular community opposed that particular piece of legislation. So this was essentially talking about the thing. As I said, the drawbacks, it did not involve the masses. It provided for communal veto in legislation. It did not resolve the deadlock between the executive and the legislature, and it emphasized the separate political existence of the Hindu and the Muslim community. So यही तो हो गया मुस्लिम लीग का एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच वी हैव डन इन 2 पार्ट्स। वी हैव डन, इनको 2 भागों में किया है। आप दोनों भागों को ध्यानपूर्वक सुनिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, बट दिस इज अ चैप्टर which you cannot ignore because it is a slightly complicated chapter. It's a slightly heavy chapter because इसमें काफी सारे क्लॉजेस और पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं रट्टा लगाने को नहीं बोल रहा हूं। अगर आप इसको उस समय की राजनीति के तहत समझेंगे तो आपको इसको समझने में और उत्तर लिखने में ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको एक माइंड में 1 2 3 4 5 6 उस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। और अगर आप सबका एक सब हेडिंग जो मैंने मेंशन किया है उसको आप याद रख लें और उसको विस्तार से आप उत्तर में लिखें तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन स्टडी विद सुधीर।